Good morning, students. Today we will be starting with paragraph writing. So, if we start with what is paragraph writing? A paragraph is a group of sentences about something. That means किसी भी चीज़ के बारे में हम कुछ sentences अगर लिखते हैं, that is known as a paragraph. A paragraph consists of a topic sentence, a few supporting sentences, and a concluding sentence. जब भी हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, it will have three things in it. First is a topic sentence, then a few supporting sentences, that means topic को support करती हुई कुछ sentences, and a concluding sentence. Now, how to write a paragraph? It is very important that while writing, you do not repeat your ideas. ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम अपने पैराग्राफ्स लिखते हैं तो कई बार उनकी लेंथ इंक्रीज करने के लिए व्हाट वी डू, वी जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग द सेंटेंसेस इन वन और द अदर वे. सो दैट शुड नॉट बी डन. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पैराग्राफ इंक्लूड्स टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस and concluding sentence. Now let's see one by one. If we move to topic sentence, it is the first sentence of the paragraph that introduces the topic. In a way, it conveys the overall theme of the paragraph. This sentence is very important as it introduces to the reader the subject matter of the paragraph. जो भी हमारी पैराग्राफ की फर्स्ट सेंटेंस होती है, दैट इज समवॉट रिलेटेड टू द टॉपिक दैट हैज बीन गिवन टू यू. फर्स्ट सेंटेंस ऐसी होनी चाहिए, इट मस्ट बी सच दैट उसको पढ़ने के बाद आफ्टर रीडिंग दैट अ रीडर गेट्स अ मैसेज दैट व्हाट द पैराग्राफ इज गोइंग टू इंक्लूड. पूरा पैराग्राफ क्या इंक्लूड करेगा. द टॉपिक सेंटेंस शुड इंक्लूड द नेम ऑफ द टॉपिक. जो भी आपकी टॉपिक दी है उसका नेम टॉपिक सेंटेंस में आना चाहिए. एग्जाम्पल, इफ द टॉपिक इज ट्रीज, अगर आपको ट्रीज पे पैराग्राफ लिखना है, सो टॉपिक सेंटेंस विल बी और इट कैन बी ट्रीज आर एसेंशियल फॉर अस. इफ द टॉपिक इज फ्रेंड्स, द टॉपिक सेंटेंस विल बी फ्रेंड्स आर वेरी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव. सो दैट विल बी द बिगनिंग स्टेटमेंट. सो टॉपिक सेंटेंस क्या है? जब भी हम पैराग्राफ लिखते हैं तो टॉपिक sentence is the first sentence of your paragraph and it must include the name of that paragraph. अब इसी से relate करते हुए we go for the supporting sentences. These sentences are used to support the main idea stated in the topic sentence. जो भी हमने topic sentence में mention किया है उसी के बारे में अब हम यहाँ पे elaborate करते हैं. These sentences are used to elaborate on what the topic sentence says in brief. जो topic sentence में brief means कम शब्दों में एक sentence में कह दिया गया, उसी को अब हम examples के through, facts के through आगे elaborate करते हैं. It includes facts, description, examples that support the topic. Example like हमारी जो first statement थी, topic sentence was trees are useful to us or they are essential. अब उसको प्रूफ करने के लिए हम supporting sentences लिखते हैं. Trees give us shade, oxygen, fruits, wood, etc. They are habitat of many birds and animals. They provide many medicines that cure different diseases. They provide wood that is useful in making buildings, furnitures, etc. So ये सारी sentences क्या हैं? Supporting sentences. And they are supporting the first sentence, that is the topic sentence. Now, in the concluding sentence, this is usually the last sentence of your paragraph that sums up what the topic sentence and the supporting details talk about. This sentence is used to end a paragraph. So, concluding sentence आपकी ending sentence होती है paragraph की, जो एक लाइन में जो भी हमने लिखा है ऊपर उन सब को कंक्लूड कर देते हैं कि हमने क्या लिखा है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू नो हाउ टू राइट अ कंक्लूजन. द राइटिंग कंक्लूजन confirms everything mentioned in a paragraph. A conclusion usually restates the claim in the topic sentence.
सो जो भी हमने टॉपिक सेंटेंस में लिखा है उसको रिक्लेम, दैट इज इट्स रीस्टेट्स, वो दोबारा से वो स्टेट करता है कि जो भी हमने टॉपिक में बोला था वो सही है. एग्जाम्पल, so we can say that trees are so important that one cannot think of life without them. So जैसे trees का we took the example, topic sentence दी, फिर हमने trees के बारे में बताया कि how they are useful, and then we are concluding. So yes, we can say that trees are very important and we cannot think of life without them. So this is how we write a paragraph. So जब हम टॉपिक सेंटेंस होगी दैट विल बी जस्ट वन सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस विल बी 1 or 2, एंड योर डिटेल पार्ट दैट इज द सपोर्टिंग सेंटेंसेस विल बी 3 to 4. So in that way it will make a complete paragraph. Now points to remember are: follow the word limit given in question paper. In question paper, whenever it is asked, there is a word limit, 50 words, 60 words, to stick to it. Avoid using irrelevant information. Like irrelevant information means जो टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको आप पैराग्राफ में मत इंक्लूड करिए. Put punctuations wherever needed. Punctuations means full stop, use of capital letters, comma, exclamatory mark, question mark, wherever needed, kindly use them, and write correct spellings. Okay? Now there are 2 examples given in this video for how to write a paragraph. First is on importance of fruits and vegetables in our daily diet. Now this is just an example. You do not have to write it, just read it. इसको पढ़िए और समझिए कि कैसे है. Like if we take this example, then what is the topic sentence? Vegetable and fruits are an important part of healthy diet. This is the topic sentence. Concluding क्या है? We will take rich diet in fruits and vegetable. We will be on the road to better health. So that's a concluding sentence. और बीच वाला जितना है ये सारा supporting है because it is elaborating कि वो क्यों हमारी diet के लिए important है. Similarly, time is money. It's another example. Just read it and try to understand it. So that is all about paragraph writing. Thank you.